Now, objective of this session is not teaching anything, because you all can understand that the subject cannot be taught in 1.5 hours. So that is not my objective. My objective is only 2-3 things. First thing, when 10 days are left for the exam, then what we should be doing for next 10 days so that we get confidence, we should be going in the right direction, and the chances of our passing the exam or scoring marks will be better. Second thing, how can we motivate ourselves? What motivation we require? So you can see that's a motivation from my side. Third thing, when we will be giving exam, we may have given exam in ACCA professional level earlier or may not be given. Many students are there. Those who have given the exam, they are well conversant with the exam software and everything. But those who have not given the exam, it is important for them that they need to be conversant with the software. At the same time, those who gave exam and maybe they were dissatisfied, they were unsuccessful in passing the exam, maybe they passed the exam, but definitely they must have done some mistake while attempting questions in the exam in other subjects. So how can we overcome that? And in the exam hall, during 3 hours, 15 minutes, we can give our best. And the last thing we can say, always exam is an exam. Now suppose when the cricket match is going on between India and England, in the second test and the first test, India performed very well. But in the third test, they all out at 78 in the first inning. That does not mean that the Indian batsmen are bad or something. One day can be a bad day. One day is not my day. Maybe I have studied very well, performed very well, but on the given time, that is 3 hours, 15 minutes, I am not able to give my best. So we should not be taking tension that exam is everything. Whether we pass or not, don't take tension that if you fail, what will happen? Nothing will happen. The life will be running like this only, just that we will be giving exam in December. So that if you think, then the tension will relieve. Exam pressure, exam fever and all that will not be coming. When you discount yourself, ki if I will not pass, nothing will happen. Just that 3 months extra I will take. Or maybe if other subjects are left, I will be giving in December both the exams which I will not clear and the another subject. So if you discount like this, then in that case problem will be less and you will be more rejuvenated to appear for the exam. So what I am going to cover, that what the institute is saying relating to preparation in last 10 days, what is my advice, taking you to the institute website, what we should be practicing in last 10 days, how we should be revising. Then I will be taking you downloaded from the institute website only. There is an exam in the past term. Students give the exam. Some of the students write up exactly whatever the student has written. That write-up is given here. And on that write-up, this is written by a student, not by the institute. This is a student answer. And how the institute is checking the copies. Because many times it happens that, suppose I have given my exam, I found that I will definitely fail. But the result is positive. It happens in the last term, many terms. Many times it happens that you have done very well, but you found that you are not able to clear. So actually what the institute is asking, how they are marking the students' questions, what is their marking guidelines, so that we cannot question the institute that if somebody is scoring 46, sir मैं recheck के लिए दूँ क्या? कुछ नहीं होना recheck देकर, because उनका marking guidelines एकदम fixed है. So if you follow that marking guidelines, then in the exam hall, since you know that they will be marking like this, you will be proceeding in that way that at least you get the pass marks.
So that I will take around, you can say 25-30 minutes. And first 25-30 minutes, a basic understanding how we should study in next 10 days, what we should be doing, that. Then at the end, because it's a session of 1 hour 10 minutes maximum. Then at the end, if there is any specific query, I will deal. I am not teaching anything in this entire thing. In this 1 hour 10 minutes, I am not teaching anything. Because when I will say everything, you will find that there are actually no teaching possible and not required also. You have to do your work for coming 10 days. Now, the first thing, now don't write anything, because whatever I am writing, once the session is over, I will be mailing to all of you. So you don't have to take tension. Whether you have studied with me or not, it's not a session for my student. It's for everybody. Anybody can join. So I will mail you because you are already in the database. We will be mailing you whatever I am showing. Actually, whatever is there, we have already mailed, but still we will mail. Don't worry. So just concentrate. And nothing is that in which you need to write this. So just concentrate on understanding the concepts. The first question is, in exam, which question I should start first? Whether it's part A, 50 marks, whether it's part B, 25 into 2. Which question? Most of you already understand there is no rule that I need to answer the questions in the order in which they are given. I can answer any question which I like. If I am giving pen and paper based exam, not possible in ACCA, then also so many exams we have given in life, then it is not essential that I will be starting with the first question. Similar is this exam. According to me, whether it's a pen and paper based exam, whether it's a computer based exam, it is very essential that initially when I am starting with a particular question answer, my confidence in that should be very high. I should be starting with the best thing. If my start will be good in exam, the chance of my passing the exam will be very, very high. So it is very essential that you start with your best question, with your best. Now, something which is very easy for Soumyadev may be very difficult for Rahul. Something which is very easy for Rahul may be difficult for Soumyadev. So it is 5 fingers. Nobody can say that this is an easy question. Different students understand different concepts in different way. So we can say that first of all I should start with the best thing. Now when you are starting with the best thing in the exam, many times it happens that we get carried away. The question is of 5 marks, but I am writing like it is a 10 or 15 marks question and I am giving extra time since I know well. But मेरे को 5 में 10 नहीं मिलेगा. If the question is of 5 marks, the examiner is not going to give me 10 marks. If he is fully satisfied, he will give me 5 out of 5 only. But because I have taken extra time in something in which I know, then the difficult part, so I will be taking further extra time. And I will not be getting that time to complete that. Maybe I will be leaving the exam. I am solving only 70 marks, 80 marks, 20 marks not done. The chances of passing in the exam based on part of the paper answer done is very less. If I am a student, 100 marks paper, and I have answered only in 90 marks, 85 marks, there is a very high probability that I will not be able to score 50. Maybe I will score 46, 47. Examiner is interested to make your 46 to 50. But where he will give you exam, where he will give you marks. Because out of whatever you have written, he has given you 46, 47. But to give 3-4 marks more, you need to write fully, na? Then only I can give you marks. But if you have not written entire 100 marks, how I will help you? Now after the exam is over, Soumyadev or anybody will call, sir, मेरा छूट गया. कोई फायदा नहीं है बोलकर. जब हम लोग क्लास के पहले जब 50 बार भी आप मेरे से बात करते हो, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ सौम्यदेव, नथिंग पर्सनल. आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ एनीबडी कॉल मी, कि मे बी प्रदीप विल कॉल मी, सर आई हैव सोल्ड 75 marks only. What I will say at that time, since you have given the exam, I will just say chance of passing is less, which I am saying now only.
नाउ आई एम सेइंग बिकॉज वी हैव नॉट गिवन एग्जाम नाउ आई एम सेइंग अगर आप 75 मार्क्स का सॉल्व करते हैं तो आप फोन करके कुछ बोलो ही मत. 100% यू विल नॉट पास द एग्जाम. 100%. आप बोलेंगे सर मैं बहुत एक्यूरेसी लेवल, सब बेकाम का बात है. इफ somebody is a very good student, prepared very well, then in that case the question does not arise that he will be able to solve only 75 marks paper. वो question arise नहीं होता है. अगर आप properly, if you have studied properly, तभी only you can solve 100 marks paper. And I have given so many exams, you know, CA, CWA, CMA, so many exams. मेरा जिंदगी में एक ही प्रिंसिपल था, कभी पेपर में एक नंबर भी छोड़ के नहीं आना है. I have to solve full 100 marks paper. I will never fail. I know. Because I am able to solve 100 marks because मैं अच्छे से पढ़ के गया हूं. लेकिन if I have studied well, एग्जाम में तो कॉपी में whatever I will write, that the examiner is going to give me marks. So I have to give playground to the examiner that you kick. Then only I can get 50 marks. Otherwise not. तो आप please concentrate that you can't leave your 1 mark of the question also. Whether you are giving 1 paper, 2 paper, all 4 papers doesn't matter. You have to solve full 100 marks paper question in the exam. Whether you know or don't know. Why? I will be giving you so many proof also. So, when I am in the exam hall and you know that 3 hour 15 minutes we are getting, maybe it's a remote based exam, sitting in home, or maybe it's a center based exam, it's a computer based exam. In 15 minutes you are getting some time to go through with the questions, which one is easy, which one is difficult. Maybe that much time you got in 15 minutes. You have decided that out of first question 50 marks, A and B I know very well, or maybe B and C I know very well. In the 25 marks question, this part B, second question I know very well. Third question I have some reservation. That means out of 100 marks paper, 30, 40, 50 marks, you come to know that कि ये मेरे को अच्छे से आता है. So try to start that in the beginning. Write those answers. Try to save your time. If something you can write and solve in 10 minutes, try to do it in 5 minutes. I mean to say 7 minutes, 8 minutes. Try to save your time there. So that in difficult part you can give extra time. When you know something, your time should be saved. Not that you will be wasting your time. For timing, I always say that I'm ignoring 15 minutes extra time. If I will consider 180 minutes for 100 marks, out of 180 minutes, around 30 minutes will be reading part A stuff, question requirement, part B stuff, around 30. If we take a thumb rule, around 20% of the time. So you will be getting time to write your answer, whether it's a numerical, whether it's a narrative one, whether it's theory, practical, whatever. You are getting around 140 to 150 minutes. Take 140 minutes. So if the question is of 10 marks, because in a 50 marks question, there are A, B, C, D, different parts are there. The question is of 10 marks. Then your writing time is 10 into 1.4, 14 minutes. You can take 15 minutes. But you can't take in place of 14, 20 minutes, 22 minutes. Then ultimately the result will be that time is over, you have solved only 80 marks. That result will come. You have to be always concentrating your time कि मेरे को 1.4 minutes लिखने के लिए मिल रहा है. I'm getting 1.4 minutes for 1 mark. If it's a theoretical question, 14 minutes, 10 marks question, 14 minutes is my writing. In 14 minutes, I can write if my looking at the keyboard and all that, average speed, 1.5 line per minute. So 14 minutes means it is coming around 20, 21 lines. If it is, you can say 19 lines chalega. But if it is 16, 17, 15 lines, that means the answer is short. And if you have very good typing speed, which you have developed, because I have seen many students, देखे बगैर type कर लेता है. So maybe for them, they can type 25, 30 lines also, if the scope is there to explain your thought process. But the average length of the answer should be around 20 lines. How can you do that? You know that in your question paper, whether it's a theory, whether it's a table, whether it's a numerical, everything can be copy pasted on the answer sheet. Whether it's a Word file, whether it's a, Excel sheet which they give.
Normally the thing is that when we are working in our practical world regularly, we are doing these things regularly. But this is on the institute software you need to do. It's not a normal Excel. The Excel which is given in the software you need to use. Word features. If I am doing a word, so many functions are there. Even when I am doing practical working, then also I am not using these functions. But in the exam software, these many functions are not there. And even if it is there, I don't want to use that in the exam. Maybe cut, paste, maybe underline, maybe bold, that is enough. Every feature I am not going to use. But the problem is that if you don't work that on the institute website, on the practice platform, how you will be getting acquaintance to this that you can do this way faster. Suppose it's a Word file. We are saying that this is normal Word file. And I want to insert a table. Then we normally do like this, any column, row and all that. In the institute software also in the Word file you can incorporate. Whether you want to incorporate or not, when it will be suitable, or you should be using normal Excel sheet only which they will be giving, which they name as a spreadsheet. Nobody can teach you this. You have to teach yourself by working on the institute website. The problem with the students are that they are solving papers. First of all, they are solving from the PDF file. On the institute website, the papers are there on the practice platform and the papers are there on the PDF, that is past papers. The students are taking the printout, or I can say downloading the PDF file. Then they are solving the answers in the Word file. They are solving the answers in the normal Excel. Don't do that for next 10 days. Please, it's a request. Don't do that for next 10 days. Use the institute practice platform entire terminology. Because when you use that, you will automatically feel and understand how can you bring speed, what you can do, what you cannot do. So first thing, for next 10 days, solve everything on the institute practice platform, not normal Word and Excel. Second thing, on the institute practice platform, there are 3 to 4 papers. There is practice exam, 1, 2, somewhere 3. There is specimen exam, and then there is some sample exams which is not full 100 marks. Take a point that you will be solving 2 papers exactly in 3 hours 15 minutes on the practice platform. Sir, sir, just sorry to interrupt you, Yeah. sir. Sir, actually, now that the practice platform has been revised, Huh. just a few days back, Huh. I practiced actually Huh. for each subject in the strategic professional level, especially the optional papers. Huh. For all these 4 optionals, so what they have done is 3 practice exams full 100, 1 specimen exam full 100, and 2 past paper exams full 100. So total there are 6 papers. I don't think so. Past paper exams, it's full 100. That is sample. That is only either party. So it is full 100, sir. So now अच्छा, they have changed ठीक that. है. I mean, earlier in that pen and paper time, it was not full 100. But No, no. Earlier in the practice platform also, these many papers were not there. Earlier, less papers were there. Now they have incorporated more papers. the 6 papers, I mean, that Huh. is 1 specimen, 3 practice, and I will be anyhow taking to you to the institute website. हाँ, हाँ. Tell me. माने मैं लेके जाऊंगा. मेरा ये बोलना है कि मेरे को बोलने दीजिए, आपको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है यार. क्योंकि हो सकता है आप देखे हैं, दूसरा हो सकता है नहीं देखा है. उसको दिखाना जरूरी है. सभी को हेल्प करना है. तो मैं सोचा कि पहले मैं बोल लेता हूं, देन आई विल टेक यू टू द वेबसाइट, जिससे कि चीज कोरिलेट बेटर हो पाए. सो आई एम सेइंग दैट if there are 20 papers, I am not asking you to solve in 3 hours 15 minutes 20 papers in 10 days. I am asking you to solve 2 papers. But not that you are doing one question of part A, 1A now, 1B in the evening, 1C tomorrow, and all. That you do for every paper. But for 2 papers, for 2 question paper, you need to solve exactly in 3 hours 15 minutes. In this coming 10 days. Suppose you take a target day after tomorrow, it is 26. On 28th, you will be doing 1 paper. And suppose on 1st of September or 2nd of September, you will be doing another paper.
In between that, what you are doing? Revision only. Suppose somebody will say that, sir, I have not completed my study. My topics are still left. I have still to revise. Then also, revision will go on till the end. There is no limit. But if you are not practicing on the practice platform, exactly in 3 hours, 15 minutes, you are not prepared for giving the exam. Whether your revision is done or not, forget this. You have to solve. And suppose I solved one paper on 28th. Suppose in the morning 7 to 10, 10:15, I completed one paper. You will take a break, whether your office is there or not, doesn't matter. You will take a break. After 2, 3, 4 hours, when you are studying again, evaluate your answer on the institute practice platform only with the self-marking technique, where you need to improve, what are your weak areas, where you have done ceiling mistake, what you can done faster, everything, do a Chintan Manan. And on the basis of that, you will design your study for 29, 30, 31st, that this is my weak areas. Then again, when you do the paper on 1st or 31st or 2nd, again you do the evaluation. Again you will be designed your strategy for further 2-3 days, whatever is left. I am asking 2 paper is a must for passing or for scoring good marks for both the kind of student. That's a must. When you are doing a critical analysis, the institute is giving you, like when earlier today you all joined. Actually, Soumyadev and all that joined exactly at 7. But suppose Rahul, you joined earlier. I am taking live classes for APM subject presently. I have taken already test with the students yesterday, day before yesterday. They have submitted the answers. For last 3 days I am checking their answers. Because एक question को check करने के लिए there is a whole lot of things. What is the question marking given by the institute? What is the model answers? What is the question? What it is asking? What are the verb used? Then what a student is writing? Nobody can write the same English. Everybody has his own style. The answer checking is not possible in 2-3 minutes. For a one single paper, for one student, to give him marks, it takes whole lot of time. Along with, you can see whatever other works are there. So I always say that when I am running a live class, the subject for which live class is running, I will be taking mock test in the class. But for the subject for which live class is not running, it is not possible to take the mock test. Because if you submit, when I will check. And I don't want to give feedback in 1 or 2 minutes that good or bad. Not logical. Unless and until I am not explaining that where you are going wrong, this student, you see, सब जगह गड़बड़ी किया है और इतना बार क्लास में बोल दिए, फिर भी सारा जगह मैंने लिख लिख कर बोला एक एक नंबर कहां देना है नहीं देना, अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है. Still the things are left. You need to do that on your own for 2 papers on the basis of the suggestion given by the institute. There are many students who are solving papers, but they are solving paper of one question, say now, one question in the evening, one question tomorrow, and then they are completing all the papers. They are doing the papers, but for exam they are not ready. Because they have not solved a single paper in 3 hours 15 minutes, which will be the case in the exam. Time pressure is there. तो आप कैसे समझेंगे कि how I will be handling? At the same time, अगर Excel shortcut वगैरह है, I have already uploaded 1.5 years back a video. Even I am also not so much speed up in Excel. But Excel को देखकर you also working. You can just see that video or maybe in the exam practice platform. The formulas are given. That shortcut you need to use in AFM paper very much. अगर आप नहीं use करोगे, then in that case you will not be able to complete your paper. So when you will be working on the institute website practice platform, then only it is possible. Otherwise ये possible नहीं है. Maybe you have solved so many papers from Kaplan, BPP, this, that and all that. But ultimately the result will not be there. Because you are not ready for the exam. Maybe you have knowledge, but आप exam के लिए तैयार नहीं हो. For that, like just Soumyadev was saying, I am taking you to institute website just for 5-7 minutes to give you, because many times students say that कि सर पेपर कहाँ है, अब उसको कैसे जाके दिखाएं कि पेपर कहाँ है. ACCA, students study support resources, under study support resources, ACCA qualification,
under ACCA, AFM, under him. Suppose you will say that मेरा कापलान में क्वेश्चन बाकी है करते रहिए. But you have to go here and solve the paper on the platform. Most of the student taking the question from past exam library, which is PDF paper solving one whenever they are getting time. But that way you cannot pass. You have to go in the practice platform. This is the practice platform of the institute. In the practice platform, there is login. Click the login. Use your ACCA ID and password. Go into this. After going into this, you will be getting all the 15 subjects of ACCA. We are concerned with advanced financial management. AFM, there are 3 portions, 2 portions official. I am concerned with official. Like he said, past exam library, March, June 2021. Maybe I have not gone into this. He's saying that it is a 100 marks paper. Maybe it is no issue. Then under practice exam, it is 3 paper. These 3 are 100 marks paper. And then specimen, this is 1. I am saying on the website, suppose all are 100 marks paper. In total 6. Maybe there are so many questions which you will be seeing here. You have already done from Kaplan BPP. Reason being that Kaplan BPP has taken from here. Not that they have taken from Kaplan. 80% question in Kaplan BPP are from institute website. आप कहीं से भी कर लो. They must have changed name of the company, this, that. That's not a problem. इसमें से you select 2 papers which you want to do exactly in 3 hours 15 minutes. Any 2. Suppose I am going into this. This is specimen paper assigned. When you do assigned, in the left hand side it is showing assigned. Start. When we start, then in the next button, next. If somebody is giving exam first time, read the instructions so that in the exam hall you can save your time. You can use your time in fruitful things. For that reason, read these instructions. Part A, Part B, they are writing. I am proceeding. Next is there. Now opening this company background, reading this. Just 1 second, let it open. Suppose I am reading this. It is a large listed company. This is very important to explain theoretical concepts that it is not a private company. Listed, large. This is important for me. So I am highlighting this. Why I am highlighting? Because when I am reading, and if the highlighted portion I want to use later, suppose I want to use this sentence later. I want to use this. I have gone into WordPress. In the WordPress, I have pasted this. In the copy pen based exam, you can't do this. If you want to write something from the question paper in your answer sheet, you need to write only. No shortcut. But in the exam, this shortcut, when you will be, if you are not conversant with this, how you will be using this in the exam? Not possible. Institute is saying that for writing copy paste, whatever is written in the question, you will not get any marks. I understand, I will not get marks. But I understand that with that I can build up my write up. मेरे को स्टोरी अपना शब्द में बताने की जरूरत नहीं है. स्टोरी बनी हुई है, उसको लेकर मैं लिख पाऊंगा. So I will be able to write a better answer when I will be using this technology. You can say here you want to use table. आपको Excel नहीं use करना है. There is, you can say, there is a question in which you want to do a comparative analysis between 2 divisions. आप टेबल बनाया, यहां पर डिवीजन A लिखा, यहां पर डिवीजन B लिखा और चालू हो गए. It is not a problem, but when you are not using the features, how you will come to know that in the exam you will be using them? मेरे को थोड़ी ना सबको यूज करना है. Bold, italics, that's all. और नहीं यूज करना है. When we do normally, how many features we are using? But कुछ features तो ध्यान रहना पड़ेगा. If suppose something is illogical written, I don't require strike through. That later on I will not read this. This shortcut you can't manage when you are not doing 2 times on the institute website papers. अब suppose ये area जो है, I am not liking this area which they have given, proposal 1, proposal 2. I am not liking. मैं सीधा सीधी इससे आगे बढ़ गया. जाओ भाई, आगे जाओ, बंद करो. I want to go into the next one. Part B. In the part B, suppose this portion I am liking. I am liking this. अब यहां पर you can open this.
along with this you can open this also, but if so many things, and this also you can do copy paste straight away. आप पूरा ले जाकर अपना स्प्रेडशीट में कॉपी कर सकते हैं, फुल, नो प्रॉब्लम. आप ये सब चीज को करोगे नहीं तो आपको एग्जाम के टाइम पे प्रेशर के कारण यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग स्पीड. तो अब बार बार मेरे को वर्ड पीडीएफ में अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरी भेज रहे हो, मेरे को मन में लगता है कि मेरा बात ही नहीं सुनते हैं. When I say in the first class all these things, the same thing I am saying as a general thing also for the next 10 days. Very important for everybody. If you have not done that, don't think that there is any excuse for this. You have to do like this. जब आपका पूरा हो जाए, question paper solve, you have done everything solved, then in that case, exit the exam. Yes, exit. In the exam hall तो automatically 3 hour 15 minutes over, आप exit क्या करोगे? Exit done, then go into the tab mark. Under mark tab you will be able to see AFM. AFM is specimen. Just now it is August 26 I have started. 2 minutes I have done the paper. Institute is not concerned with 2 minutes. Click self mark. When you click self mark, then what I have written, what institute model answer, marking guidelines, in the right hand side on which marks to be given, should not be given, and all that, everything is written. When you read this, you will be able to understand कि आपको यहाँ number मिलेगा कि नहीं मिलेगा. You can give yourself marking, you can focus on your weak areas. और जब when you were doing a paper, you were not doing topic wise study. Now the topic wise study time is gone. The questions are from 2-3 topics together in one question. So you need to study in combined manner, not only forex, not only interest rate, not only this, combined form. So all things will be getting cleared and you will be able to analyze your comfort, speed and everything when you will be doing the things here. That's a must. Nobody can say that, and nobody should say that कि एग्जाम के बाद मेरा इतना छूट गया. कोई फायदा नहीं है. आप अगर बोल भी रहे हैं तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि if you are saying कि मेरा ये हो गया, be ready that I will not be able to pass this exam. What the institute few things are saying, because so many things are taken from the website here and there. The basic thing. Institute is saying time management. Your approach to planning your time in the exam is crucial for completing the exam and to ensure best use of the time available. If you do not manage your time well, the penalty can be very severe. It is often seen that there are candidates who reach 46, 47 with 1 or 2 requirements still to be answered. 10, 15 marks answer नहीं दिया है, फिर भी student का 46 आ चुका. Only to find that there is nothing left to mark. If I am the examiner, I want to give to the student in place of 46, 50. How I will give him? Because he has not answered the entire paper. If you manage your time badly, your chances of passing are reduced. It is much tougher to get 50 marks if you only solve 90, 80, 75. 90 लिखने से भी अब फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है. Because 90 में 50 आने का चांस कम है. But 100 में 50 जरूर आएगा. I'm not reading everything which you can read because those are basic. We know this, but still we do blunder while sitting in the exam hall or maybe remote based, whatever. We need to overcome this while giving the exam, because examiner is going to give you marks on your write-up. They are not going to give you marks on your knowledge. Maybe your knowledge is there, but in the copy it is not there. How I will give you marks? I cannot give you marks for that. So whether you want to pass, whether you want to score good marks, whether you want to score world rank first, second, third, for all types of students, practice on the practice platform. Don't practice topic wise. सारे सब्जेक्ट के लिए यार, ये केवल इसके लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए. उसके लिए भी मैं यही बोलूंगा. आई हैव ऑलरेडी सेड फॉर एपीएम दिस ओनली. और मैं हर सब्जेक्ट के पहले क्लास में यही बोलता हूं. ये वीडियो सारे मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं, कोई नहीं सुनता है. हाँ हाँ. सवाल है कि सर मान लीजिए अगर कोई पेपर में एक्चुअली लाइक आई फाइंड दैट सर समटाइम्स मैंने ये नोटिस किया है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द पेपर मॉक पेपर्स कि सर 50 मार्कर जो है, जो पहला वाला जो कंपलसरी है, उसमें सर इतना टाइम लग जाता है कि बाकी दो 25 मार्कर्स के लिए बहुत कम
तो मैं इसके लिए क्या बोला कि जिस जगह पार्ट ए में टाइम लग रहा है उसको बाद में करना। पहले एक बार आप पार्ट बी कर लीजिए या पार्ट ए में जिसमें टाइम नहीं लगेगा वो कर लीजिए, उसके बाद टाइम वाला को देखिएगा ना। बिकॉज नहीं तो आप वो टाइम वाला भी टाइम प्रेशर में गलत करेंगे, सीलिंग मिस्टेक, और जिसमें होना चाहिए वो सॉल्व भी नहीं करेंगे, तो आपका पेपर भी छूट गया और जो किए भी वो भी बढ़िया से नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली माथा खराब होगा कि नहीं, सोचिए आप। जब हमको ये पहले से मालूम है फिर भी हम उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। When we know this, we have to be ready for that ना। जब मेरे को मालूम है कि ये बॉलर का बॉल गड़बड़ है तो उसको तो टुकुस टुकुस करना होगा ना। उसको हम लेके जाके फर्स्ट बॉल में छक्का मारेंगे तो बोल्ड होएंगे भाई। ये तो सिंपल बात है ना। आदमी को तो वही जगह, इफ यू कैन स्विम इन स्विमिंग पूल, व्हाई यू आर स्विमिंग इन अ समुंदर, यू कांट डू दैट ना। पता है फिर भी गड़बड़ करते हैं। बात सोचो यार कि एक हो गया मालूम नहीं है तब गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मालूम होने के बावजूद तो गड़बड़ करना अलाउड नहीं है यार। गेटिंग माई पॉइंट। आपको टाइम को बचा के चलना है शुरू से, कि कोई चीज आता है एकदम जोर का लिखने लग रहे हैं, अरे यार उसका 10 नंबर ही है, 10 ही मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा 10 में से। सेव योर टाइम वेयर यू नो थिंग्स। बात समझे। अब है कि इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस का मार्किंग करता है वो कैसे करता है, हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं। बिकॉज वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय हम लोग सोचते हैं वॉट एवर द इंस्टीट्यूट हैज रिटन आई नीड टू राइट दैट ओनली, दैट लैंग्वेज ओनली, ऐसा कुछ बार बार वो लोग बोल रहे हैं, बेचारा कोई सुनता नहीं है। देखिए आपको दिखाते हैं। टी कंपनी इज बेस्ड इन वीलैंड। आई एम नॉट टीचिंग दिस बिकॉज द टाइम आई हैव नॉट एलोकेटेड फॉर टीचिंग एनीथिंग. It is just that I need to read the question, then only we can analyze what the institute is saying. T company is based in VLAND. It is listed on VLAND stock exchange, but only has a small number of shareholders. Its directors owns 45% of the company's shares. T company's growth has been based on the manufacture of household electronic goods, maybe TV, fridge and all that. However, the directors have taken a strategic decision to diversify operations and to make a major investment in facilities that manufacture of office equipment. So in place means along with the household electrical goods, we will be going into office equipment also. Detail of investment. The new investment is being appraised over a 4-year time horizon. Revenue from the new investment are uncertain, and T company's finance director has prepared what she regards as cautious forecast. So forecast करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी forecast किया गया। So predicts that it will generate 2 million operating cash flows before marketing cost in year 1, 14.5 million operating cash flows before marketing cost in year 2, with operating cash flows rising by expected level of inflation in year 3 and year 4. So 1 और 2 का दे दिया, 3rd और 4th year inflation से बढ़ेगा और 4 years लेकर चलना है indirectly. Marketing costs are projected to be 9 million in year 1, 2 million in year 2 to 4. Marketing cost deduct करे बगैर cash flow is given and then marketing cost separately given. The investment will require immediate expenditure investment 30.6 million. Tax allowable depreciation available on the investment at an annual rate of 25% reducing balance basis. It can be assumed that there will either be a balancing allowance or a charge in the final year if the sale price is less than the book value or greater than loss gain पे tax आएगा. The finance director believes the facilities will remain viable after 4 years and therefore a realizable value 13.5 million can be assumed at the end of 4th year. The new facilities will also require an immediate initial investment in working capital of 3 million. Working capital requirement will increase by rate of inflation for next 3 years, and the working capital at the end of start of 4 year will assume to be released at the end of 4 year. 4 साल का project में 4th year के end में working capital you will get back, and working capital initially is 3 million, but then it will increase by inflation every year for 4 years. T company pays tax at 30%. T is payable with a yearly time lag. First year tax, second year tax, third year. Any tax loss on the investment can be assumed to be carried forward and written off against future profits. If the project first year loss, then loss carried forward to second year loss to third year. That means on the loss,
tax saving will not be in the same year when you will be able to set off the loss. Inflation rates, different inflation not given. For everything, same inflation. Financing the investment. T company has been considering two choices of financing all 30.6 million. A subsidized loan from government with the loan repayable at the end of 4 years. Issue cost 4% of the gross amount. Interest payable is 30 basis points below the normal rate, that is 2.5 minus 0.3, 2.2. In order to obtain the benefit of the loan scheme, T company would have to fulfill various conditions, including locating the facilities in a remote part of VLAND where unemployment is high. T company would have to fulfill various conditions to get the subsidized loan, including locating the facilities in a bad area where unemployment is high. You need to fulfill the conditions. Convertible loan, second option, which the subscriber for the notes, including some of the T company's directors. The loan notes would have issue 4% gross finance discount. If not converted, loan notes would be redeemed in 6 years' time. Either they will be converted into share or redeemed in 6 years. Interest would be payable 5%, which is T company's normal cost of borrowing. Conversion would take place at an effective rate of 2.75 per share. However, the loan note holders could enforce redemption at any time from the year of 3 if T company share price fell below 1.5 per share. Even though redemption will be taking in 6 years, but अगर शेयर का दाम 1.5 के नीचे आ जाता है, so they can take the redemption even after 3 years anytime. The current share price is 2.2. Issue cost for industry subsidized loan and convertible loan notes would be paid out of available cash reserves. Issue costs are not allowed as a tax deductible expense. Issue cost पे tax नहीं बचेगा and convertible loan notes would be paid out of available. If it is required to be redeemed in cash, convertible loan, then they will be paid out of the cash available with the company. In initial discussion, the majority of board favored using subsidized loan. The appraisal of the investments should be prepared on the basis that this method of finance will be used. However, the chairman argued strongly in favor of the convertible loan notes, as in his view, operating costs will be lower if T company does not have to fulfill the conditions laid down by the government, because under subsidized loan, conditions will involve extra cost. T company finance director is skeptical, however, about whether the other shareholders would approve the issue of the convertible loan notes on the terms suggested. The directors will decide which method of finance to use. H company has a large manufacture of office equipment in VLAND. H company generated cost of equity 10.5%. That is geared cost of equity, pre-tax cost of debt 5.4. These estimates are based on capital structure 225, 6% redeemable bonds, trading at 107 of face value 100, $125 million, one shares 3.2 per share market value, and company pays tax annual tax rate at the rate of 30%. That they have said earlier also, again they have said. Calculate the adjusted present value for investment on the basis that it is financed by the subsidized loan, and conclude whether the project should be accepted or not. They are saying that when you will be calculating this answer, then in that case you need to assume we are going for first way of financing, which is normally applicable in APB, that we are going for subsidized loan. With that way you need to calculate APB and calculate adjusted present value on the basis that it is financed by, and conclude whether the project should be accepted or not. So all your relevant calculations. So all your relevant calculation is a very important sentence कि भाई सारा calculation दिखाना है and conclude करना है. Calculation के साथ साथ you need to conclude. Discuss the issues which T company shareholder who are not directors would consider if its directors decide that the new investment should be financed by issue of convertible loan notes on the terms suggested. You are not required to carry out calculations when answering part B question. No calculation theory. They are saying that when the company will be going for financing in the second option, convertible loan notes, many loan notes will be taken by directors. Then what issue will be considered by shareholders who are not the directors? What they will be thinking about that? Positive, negative, this, that. What thinking process this would develop? That we need to mention. Now, if I will go on the institute, this is downloaded from the institute website only, not prepared by me. No Jose. What the institute is saying. The 25 marks question is split between two requirements. Part A 17 marks required a calculation of adjusted present value and a conclusion on whether or not the project should be accepted. APB निकालना है and decide, conclude करना है whether accepted or not. Note the prompt to show all relevant calculations.
If you are not showing the calculations, they will not be giving you marks for that point. This is absolutely essential. Almost all candidate will make some mistakes. Almost all. If I will be sitting in the exam, maybe because of pressure, maybe I will be doing some silly mistake. Possible. Exam hai bhai. Or omit some element of the calculation. Bhul jate hain. But as long as the marker, like Somyadeep was saying, कि sir long, ये सब question में late हो सकता है. But as long as the marker can follow the calculation, आपने कोई कैलकुलेशन शो नहीं किया, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है, मैं आपको नंबर दूंगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अप्लाइंग द करेक्ट मेथड. Part B for 8 marks required a discussion of an alternative form of finance, which is convertible loan notes, that could be used to fund the investment. For the calculation in Part E, each part of the calculation will generally be awarded 1 or 2 marks. The marks are given whether it's a theory or numerical, practical, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, like that. And for which point 1 marks will be given, that is fixed by the examiner. मान लीजिए एपीएम पेपर है, 1 mark for this, 1 mark for this, 1 mark for this. When you go on the institute website as self mark, they have written 1 mark for this, 1 mark for this, 1 mark for this. You will be able to understand. Discuss means consider the pros and cons of an issue. So all relevant calculations, important highlighted thing they are saying. For a discussion, each element point will generally be awarded 1 mark. Remember, however, that to discuss means to consider pros and cons. That is, you can say use of verb. When I have prepared this, then I have taken from the institute website all the verbs which can come in the exam, and for all the verbs, what actually we need to write. When you are doing the questions practice, go on the verb, what it wants to say. A good answer to part A would take a mathematical approach, clear and easy to follow. A good answer to B would include the important features of alternative finance, cover both advantage and disadvantage of the argument for and against convertible loan. When a question prompts a specific viewpoint, shareholders who are not directors, your answer must address what should be the concern about you become the other shareholder. And when the convertible loan will be issued, what will be your concern, that you need to write. Now, they have given the points where the student has been given marks or not. I will be reading these points slightly. First of all, we need to read what the student has written. Student has written cash flow. This cash flow from where student has taken? Obviously from the question. In the question, they have written that the cash flow will be 2 million first year, then from second year 4.45, and then it will be increasing by rate of inflation in third and fourth year. Okay. So the student has taken first year 2 million, he is writing figures in thousands, then 14.5, 14,500, and then he must have added the inflation of third and fourth year. Inflation rate was given in the question, 5% and 4%. So definitely 14,500 into 1.05 and then into 1.04 he must have done. Now if I am examiner, I am not checking in the calculator whether his calculations are correct or not. Obviously, I have the solved answers ready, and in the solved answer, the figures are same only, 15 to 25. When I am in the examiner, I have ready entire answer. I am seeing that the student calculations are correct. 1 mark for this. Marketing cost. Marketing cost are directly given in the question. You don't have to do any calculation. Marketing cost is given in the question. Marketing cost is given in the question 9,000, 2,000, 2,000, 2,000, 922. For this, institute is not giving any marks, because institute is saying that you are copy pasting something which is given in the question. What you are doing, what brain you are applying, nothing, no marks. Then depreciation. Depreciation, they have said 25% WDV method. So this depreciation in the model answers, the depreciation they have calculated below. They have calculated the depreciation, this, they have calculated in the working the tax because of loss and all that. The student has shown depreciation here, no problem. Depreciation अगला लिखा तो है ना, depreciation वो यहां लिखा है, उसका calculation उसने यहां दिखाया है. Calculation of discount rate where the depreciation is shown,
where the depreciation is shown, no calculation shown. But I can say that if we just check 25%, then the depreciation is coming. The examiner is not checking your figure that whether the because in that case I will not be able to finish copy checking. Just depreciation is shown here, later on it can be added back. There is no problem. Profit or loss, that is contribution cash flow before marketing cost minus marketing minus depreciation figure. Maybe there is a plus minus mistake which should not be happening, because with the Excel we can do plus minus fatafat. But when you use the Excel, then only na. Otherwise, so in calculator 2000 you are taking 1 laddu more, less 1 laddu, plus minus, doing mistake. हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अगर Excel का use करेंगे, you can save your time. Loss carried forward, there is a loss. How this figure came? Now it is 6762, 14650 loss. He is adjusting this one. The balance is still there. Balance gain. Then the tax is 30%. So he's calculating 1034 tax is paid next year on 14425, maybe 30% next year. And then after tax cash flows, then depreciation added back, then initial investment, then working capital 3000. With the inflation it is increasing, and in the fourth year we are getting back cash flow discounting factor at the rate of 10% net value. He has calculated those NPV and all that can be calculated with the Excel in seconds. Maybe earlier when the pen and paper based exam was there, Excel was not there. Now it is there. You can use the feature to do the shortcut calculations. Calculation of discount rate, market value of equity, market value of debt as per MM. This formula, if you don't remember, in the question paper, this formula is printed. Because in case of base case NPV, when you find out present value, we use the cost of equity without debt. That is unlevered form. So you can do the calculation of cost of equity in two parts. But they have done the straight cut formula. That is levered cost of equity given, unlevered we require, and this is the formula. What he has done mistake, the value of debt is 241. The value of debt is 241. But he has taken 241 in the denominator, a ceiling mistake. बेचारा भूल गया, बेचारा ध्यान नहीं दिया कि 241 ऊपर लेना नीचे लेना है, उसके कारण उसका ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा गलत हो गया. But it's a ceiling mistake. इससे हम लोग से भी हो सकता है ceiling mistake. Then in the base case NPV we calculate in APB after base case NPV we calculate the financing effect. The financing effect is issue cost by 96 into 4. Tax relief on the interest. On this there is no tax benefit, they have said. Tax relief on interest, loan amount, the interest rate is 2.5 minus 0.3, 2.2%, and 30% is the tax benefit. So this is every year you will be saving tax. This is 202. Now what calculation he is doing, I am not concerned. I am just concerned that when we are paying tax, so first year tax, second year, third year, fourth year, fifth year. So even though 202 is every year, but it is not from first year, second year to fifth year. उसका present value टान कर लाना है. Present value किससे लाना है? Whether you use normal, the debt rate of the company, whether the risk free rate, सब चलेगा यार. वो लोग बोलते हैं cost of debt use करना है. अब आप cost of debt कौन सा use करते हो, अलग अलग जगह अलग अलग किया हुआ है. The tax saved on subsidized loan is coming this. अब subsidized loan का पूरा value कोई उसने tax saved मान लिया. Subsidized loan का ऊपर you were in place of normal interest rate 5%, you were paying 2.2%. So the benefit is 2.7%. On 2.7% you are saving, but that saving will involve a tax, because saving will be added in income, you need to pay tax. So your 70% will be the benefit. उसने वो सब ध्यान ही नहीं दिया, सीधा सीधी calculation. This calculation is wrong. PV of tax shield, वापिस से this 6426 is anyhow figure wrong. Maybe he is doing this calculation correct, but ये wrong हो गया है. अब this financing effect is wrong, लेकिन फिर भी एग्जाम में 17 में 12 मिला है उसको. 12 भी क्यों मिला? एक्चुअली उसने थ्योरी कहां लिखा? Whether he has concluded, ये concluded है. Project should be accepted since NPV positive. NPV है, this is APB है. क्या समझाएंगे नहीं? What is base case NPV? What is APB? Why it is concluded? कुछ लिखेंगे नहीं. So because of he has not written any theoretical part, वो उसका 3-4 नंबर गया. एग्जामिनर उसको वो 3-4 नंबर नहीं दे रहे, और कैलकुलेशन में गलत होने के बावजूद you see
उसको कैलकुलेशन में बहुत जोर का नंबर मिला है, रॉन्ग होने के बावजूद. इवन दो देयर आर सो मेनी सीलिंग मिस्टेक्स, he got so many marks. What the institute is saying, 1 mark for all correct cash flows excluding marketing cost. The cash flows 2000 first line, 1 mark. There were no marks available for marketing cost as they are pasted from the question. There is no depreciation line in the model answer, but the marks is awarded because it can be clearly seen that this tax calculation, this is for the tax working. So 1 mark usko depreciation calculation ka mila, as it would therefore be unnecessary to refer the referenced working. So in the model answer, first number working for depreciation given. Student has written the depreciation in the main answer only. Marks uska kata nahi, mil gaya. 2 marks were awarded for the correct M. That means somebody is asking depreciation here, there. Arey bhai, jahan marji hai wahan likhna hai yaar, koi problem nahi hai. 2 marks are awarded for correct calculation of tax cash flows after adjustment. These would have been better shown in the separate working. The attempt to incorporate working in answer gives risk of errors. They are saying that if you calculate tax part, because there is depreciation, there is loss set off and all that, if you do this separately, the chances of doing ceiling mistake will be less. But still the student has done the calculation in the main working, 2 marks are given for tax. But uska cash flow wrong hai. फिर भी वो लोग टैक्स कैलकुलेशन का 2 नंबर दे रहे हैं. There is a rule in the exam which is called own figure rule. Own figure rule means your calculation are wrong, but on the basis of that calculation, the further logics are correct, marks will be awarded. It's not that if your cash flow, that is revenue or cost or contribution, anything is wrong, तो आप टैक्स वगैरह का मार्क्स नहीं मिलेगा. मिलेगा. You not be given double penalty. Where you have done wrong, that marks is deducted, but उसके बाद का नंबर मिलेगा. सौम्यदेव, when we gave exam for SBR, we think that हम लोग को नंबर नहीं मिलेगा. कैसे पास हुए? क्योंकि गलत करने के बावजूद भी उसके ऊपर ओन योर फिगर रूल था. ओन योर फिगर रूल में आपने फिगर गलती लिखा, कैलकुलेशन गलत किया, लेकिन उसके बेसिस पे जो लॉजिक दिया वो सही था, पास हो गए. नंबर लिख के आए तब पास हुए ना, लिखते ही नहीं तो कैसे पास होते? प्रदीप, अगर हम लोग 100 में 75 मार्क्स करके आएंगे तो फेल होएंगे. प्रदीप जी, बाद में फोन करके नहीं बोलना है कि सर मैं नहीं कर पाया, फायदा नहीं है. अभी बोल रहा हूं, आपको अपना टाइम, मेरा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है. 100 नंबर का पेपर करना होएगा अगर पास होना है. There were no marks available for the initial investment as the amount it's because 30,600 given in the question. Why they will give you marks? 2 marks awarded for correct working capital calculation. अगर आपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन इन्फ्लेशन के साथ सही किया है, 2 नंबर उसका टर्मिनल फ्लो के 4था साल में पैसे वापस मिलेंगे. उसने टर्मिनल फ्लो गलत लिखा है तो इसलिए उसको एक ही नंबर मिला है, वहां पर 1 नंबर उसका वहां गया. अभी तक उसका नंबर कहीं नहीं कटा. इवन दो मिस्टेक्स आर देयर, सी इवन दो ऑल द कैश फ्लोज फॉर ईयर 1 to 5 आर इनकरेक्ट. उसका कैश फ्लो गलती है. एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं? द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड ऑल द फुल 6 marks अवेलेबल. It is not the task of the marker to rework the calculation what wrong you have done where, to determine or how errors have been derived. मेरा काम वो नहीं है. For the purpose of this article, this has been determined to reinforce the point that inappropriate calculation of working capital last year में गलती हुआ है उसका. In this script, the candidate has incorrectly included the adjustment of losses. उसने लॉस का एडजस्टमेंट गलत किया है, इसलिए उसका फिगर्स गलत आ रहा है. कहीं पर सीलिंग मिस्टेक किया है, फिगर प्लस माइनस करके 8922 आएगा, उसने 9922 लिख दिया है. कोई बात नहीं यार, उसके लिए उसका पेनल्टी एक ही नंबर है. द डिस्काउंट फैक्टर इज रॉन्ग. उसने गलत किया है बिकॉज डेट और इक्विटी में इक्विटी डेट ले लिया, 1 नंबर वहां कट गया. उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन में केवल 2 नंबर काटा गया. एपीबी रॉन्ग, बी पे बेस केस एनपीबी रॉन्ग बिकॉज ऑफ सम सीलिंग मिस्टेक, बट इन द कैलकुलेशन ही गॉट 12 मार्क्स. अगर वो 2 नंबर वो भी गलती नहीं करता, 2 और मिल जाता, फिर भी 3 नंबर मिलता नहीं. बिकॉज कंक्लूजन कहां किया मेरे भाई? क्यों कंक्लूड नहीं किया? तो स्टूडेंट सोचेगा मेरा तो गलत हो गया. अरे गलत होने से भी पूरा नंबर दे रहा है इंस्टीट्यूट. ओन योर फिगर रूल, ओन योर फिगर रूल. एंड इन एएफएम व्हाटएवर न्यूमेरिकल्स आर देयर, आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट का गलती नहीं होएगा. एक फॉरेस्ट का आ रहा है, कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी गलती हो गया, मेरे से भी हो सकता है. आपकी बात ही क्या करूं? आप टेंशन मत लीजिए, फटाफट बढ़िए. आप उतना टेंशन क्यों ले रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने की क्या करना है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन रॉन्ग है, 1 नंबर गया. वो रॉन्ग कैलकुलेशन के बेसिस पे वॉट एवर इंटायर कैलकुलेशन यू आर डूइंग, दे विल बी गिवन फुल मार्क्स. अगर आपका कहीं और गलती नहीं है,
योर टोटल फाइनल आंसर इज रॉन्ग बिकॉज आपका फॉरेन एक्सचेंज रॉन्ग हो गया। तो प्रदीप जी इतना टेंशन लेते हैं कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट सर ऐसे हुआ। अरे भाई काहे को टेंशन ले रहे हैं? उसके लिए आपको 10 में 1 नंबर कम मिलेगा, 9 तो फिर भी मिलेगा, लेकिन आपको 5 मार्क्स तो तब मिलेगा ना व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द इंटायर पेपर। आप सॉल्व ही नहीं करोगे तो मैं नंबर आपको कहां से दूं? तो उस केस में तो 50 के नीचे आएगा। आई एम नॉट रीडिंग द सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट ने थोड़ा गलती ज्यादा किया है, उसका कैलकुलेशंस में मिस्टेक थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सेकंड कैलकुलेशन थोड़ा थ्योरी ज्यादा लिख के है। फर्स्ट वाला थ्योरी सब आंसर छोड़ दिया, लिखा ही नहीं। इसने थ्योरी लिखा तो बेटा कुछ फर्स्ट स्टूडेंट नॉट रिटन फॉर 8 मार्क्स एनीथिंग। ले वेदर ही डिडंट गेट द टाइम और नॉट आई डोंट नो, बट इतना जोर का कैलकुलेशन में मगन हो गए कि भाई थ्योरी सोच भूल ही गए कि इन द फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स, इन द सेकंड पार्ट 8 मार्क्स, 11 मार्क्स तो थ्योरी है। उसके लिए बाबू ने लड्डू लिखा है और ये दूसरे वाले ने न्यूमेरिकल्स मिस्टेक किया, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया। इसने बेस एनपीबी निकाल माने बेस केस आई मीन टू से एपीबी निकालने में फाइनेंसिंग बेनिफिट निकाला ही नहीं बाबू ने। ले स्टिल ही इज गेटिंग आउट ऑफ फर्स्ट सेकंड पार्ट, आउट ऑफ फर्स्ट पार्ट सिंस ही गॉट 4 and 4, 8 मार्क्स फिर भी मिल गया, जबकि उसने अब समझिए इन्होंने एपीबी निकालने में फाइनेंसिंग बेनिफिट सब उड़ा दिया, कुछ कैलकुलेशन नहीं किया। तो उधर का 5-6 मार्क्स गया, इधर में फर्स्ट में सम कैलकुलेशन सर रॉन्ग, वहां गलती गया, लेकिन थ्योरी लिखने से 4 नंबर तो आया। अगर वो भी नहीं लिखता वो भी जाता। उसमें भी उसने क्या किया, जहां जहां पर वेयर दिस स्टूडेंट हैज कॉपी पेस्टेड एग्जैक्टली द लैंग्वेज दे हैव रिटन, ये उसने उतार दिया है क्वेश्चन से, no marks. Where you were copying the things from the article, they are not giving you marks on that. But many times it requires to be copied in your answer sheet to get the rhythm. कि मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा. I will be able to explain that through the write-up which is already given in the question. I mean to say that when you are doing some mistakes in forex, in interest rates, in APB, anywhere यार, मिस्टेक जो होगा उसका नंबर कटेगा। उस मिस्टेक के बेसिस पे जो उसके बाद की मिस्टेक है उसका नंबर नहीं कटेगा, बिकॉज देयर इज अ रूल इन द एग्जाम ऑन योर फिगर रूल। योर फिगर इज रॉन्ग, बट बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग फिगर अदर लॉजिक्स आर करेक्ट, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स ऑन दैट। बट आप करके आएंगे तब ना, आप सॉल्व करके नहीं आएंगे तो मैं आपको नंबर कैसे दूं आपको? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ऑन द वेबसाइट वॉट एवर योर प्रिपरेशन इज डन, solve 2 papers within these 10 days. Whatever your weak areas, work on that. Discount in your mind that when you have studied so much, you can easily pass the exam. And if you have not studied well in these last 2 months, 3 months, you have not studied well, you are already puzzled. Think that even though if you don't pass, you fail, take it as an experience. Don't take tension. Because if you have not studied well, then तो खोने का डर ही क्या है? When I have not studied, the chances of my passing is less only. Why I am taking tension if I will not pass? I will not pass. तो उस केस में when the tension will relieve, I will be able to perform in exam. और मे भी हो सकता है कि हम एग्जाम पास कर जाएं इवन दो मैंने उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किया है। There are many who pass, believe me. There is a student around 2-3 years back SBR में, सर बोलता है अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है सर, 7 दिन बाद एग्जाम है, फॉर्म भर के रखा हूं, क्या करना है? मैंने बोला अभी तो यही हो सकता है, पेपर निकाल लीजिए, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से सारा सॉल्व करिए। ही गेव द एग्जाम, ही स्कोर्ड 52, हो गया। लो, somebody will say that it is very easy. Easy नहीं है। He has written in the exam what is required in the question. So why he will not be given marks? सर सीए का कॉपी मैंने इतना सारा चेक किया है, बिलीव करिए। स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि सर ये लोग तो एकदम सेम, कुछ नहीं, सब फालतू बोलते हैं, सब फालतू। सारा सीए का कॉपी में चेकिंग प्रोसेस एकदम सही है, सारा सही है। अब कहीं किसी के साथ मान लीजिए हियर 2 मार्क्स आई एम गिविंग 1 मार्क, इसके लिए कुछ थोड़ी ना झगड़ा हो सकता है यार। देयर में भी 10 to 11, 10 to 9 तो होएगा ही ना। यू विल बी गिविंग मार्क्स टू योर सेल्फ, यू विल हैव अ डिलेमा 10 to 11, 10 to 9, बट 10 के बदले 2 नहीं होगा, 10 के बदले 20 नहीं होएगा। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। If we prepare in the right direction, results will be ours. But if we are not preparing in the right direction, we can't get the results. We can't get the fruit.
गेटिंग? तो ये सबके लिए कौशल जी, ऐसा नहीं कि एएफएम, एपीएम, एसबीआर, माने एसबीआर, एसबीएल, एडवांस ऑडिटिंग, एडवांस टैक्सेशन, सारे सब्जेक्ट के लिए है, इवन स्किल लेवल के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए केवल बात हो रही है। So if there is any specific query, anybody, please ask. I am not teaching anything. My objective is not to teach forex, interest rate or this and that. My objective is just to motivate and the mistakes which you should be avoiding in the exam hall and in the coming 10 days, how you need to study. That is my objective. सर Yes. पूछना था सर। हाँ, सर जैसे जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम लोग एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं वर्ड पे करना है सॉल्व। माने आप प्रैक्टिकल पार्ट को भी वर्ड पे कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सेल में करेंगे, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा। आप जल्दी से कैलकुलेशन, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एनपीवी, आईआर निकाल पाओगे अगर है तो, लेकिन वर्ड में तो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे ना, इसलिए। हाँ एंड सर एक्सेल में क्या होता है ना, हम लोग को इक्वल्स टू डाल के फॉर्मूला डाल देते हैं तो अमाउंट डायरेक्टली आ जाता है। हाँ, तो हम लोग को ब्रेकअप नहीं दिखाना है आपको। आप वहां पर फॉर्मूला जो डाले हो, एग्जामिनर को अगर चेक करना है वो आपको फॉर्मूला चेक कर लेगा, लेकिन मैं अगर एग्जामिनर हूं, मैं फॉर्मूला चेक नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने आपको एक्सेल फीचर दिया क्यों है? आई एम आस्किंग यू दैट यू अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा सर जैसे इसमें जैसे आप जो दिखाया था ना हाँ। सॉल्यूशन ये लड़का का, इसमें हाँ। से ऊपर सर चाहिए कुछ हाँ चाहिए सर, जाइए लीजिए। फॉर एग्जांपल हाँ। सर जैसे मैंने वर्ड पे लिखा था एग्जांपल, मैं आपको पूछता हूं। सर जैसे हम लोग पीवी निकालते हैं, हाँ, तो अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन है फॉर एग्जांपल, तो ये हाँ। ब्रेकअप नहीं दिखाना, बिकॉज़ नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना है। एक सेकेंड मैं बता देता हूं अभी। सपोज 1000, 2000, 3000, 2000, ठीक है। मेरे को निकालना है पीवी, ठीक है। किस चीज का निकालना है? दिस कॉमा सपोज 10%, यही तो निकालना है मेरे को। You have entered too few arguments. 1 second. दो इनपुट और देना, टाइम पीरियड और फ्यूचर वैल्यू। नहीं डालना है हम लोग को। टाइम पीरियड क्यों डालना है? ये तो अपने आप ही चार्ट तो फिगर आ रहा है यार, हम लोग को नहीं डालना है टाइम फिगर। वन, रेट पहले आएगा। हाँ वही मेरे को लग रहा है कि रेट पहले आएगा, उसके बाद वो आएगा। 1 सेकेंड। 10%। रेट पहले आएगा सर रेट, फिर उसके बाद कॉमा, फिर द एंटायर सेल बैक। यस डन सर। Still that is not taking 1 second. ओ सर वो 10% नहीं, शायद वो 0.10 होगा। एक बार रुक जाइए 1 सेकेंड, हो सकता है मैंने इक्वल टू एनपीवी 0.10। नहीं, एनपीवी नहीं निकलता है सर, पीवी लिखना पड़ता है। अच्छा पीवी। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग से माइनस करना पड़ेगा। यू हैव टू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द एक्सेल विल नॉट कैलकुलेट फॉर यू द इंटायर माइनस करके। वाई इट इज नॉट टेकिंग यार? ये 10% से कोई मतलब नहीं था। 1 सेकेंड, नहीं सर चलिए। मेरे ख्याल से 1 सेकेंड, सीधा ब्रैकेट करना आएगा। पीवी 10% कॉमा वाई इट इज नॉट। मांग रहा है। है पीएमटी क्या होता है? पीएमटी नहीं चाहिए यार। 1 सेकेंड, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं चाहिए पीएमटी। कुछ नहीं चाहिए पीएमटी वगैरह, कुछ नहीं चाहिए। खाली डिस्काउंट रेट लिखना है, कैश फ्लो लिखना है, पीवी अपने आप आता है। 1 सेकेंड। एडवांस फिनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफिशियल रिसोर्सेस, स्पेसिमेन एग्जाम, असाइंड, एएफएम, स्टार्ट। इसमें यहां पर फॉर्मूला बुक दिया हुआ है। अब सोचिए कि नॉर्मली मान लीजिए कि मेरे को एग्जाम देना है,
तो मैं एग्जाम के लिए प्रैक्टिस नहीं किया हूं, आप समझो, इसीलिए मेरे से एनपीवी फटाफट नहीं निकल रहे। मान लीजिए जो भी निकाले हूं, अभी तो नहीं निकल रहे हैं ना एक बार तो। नाउ दे हैव रिटन हियर तो सेकंड टर्म में फॉर्मूलेशन, अगर आप फॉर्मूला ये रहा, इसी फर्स्ट में ही रहता है यार। एनपीवी के लिए इन्होंने लिखा है स्क्वायर रूट सम एवरेज पावर काउंट राउंड log NPV. NPV, we can write PV, there is no problem. Rate, comma, value 1, value 2, value 3, value 4. So we are doing that only. NPV 0.1 B1 to this. ठीक है, तो we are doing this only यार, यहाँ क्यों नहीं ले रहे? So should we write NPV? कोई बात नहीं यार, लिख देते हैं। सर वो जो ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आप एक स्पेस दे रहे हो ना, अब हाँ। स्पेस को बिना मत, हाँ, मेरे ख्याल से हम स्पेस वगैरह दे दिया था। आई एम गेटिंग। स्पेस के लिए आर्गुमेंट हो रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी ये लाइट नहीं चला है यार, आएगा नहीं मेरे को लगता है। ना आ गया, ठीक है। सो इट इज कमिंग 6181.95। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8। 8000 का present value at the rate of 10% is this. It will be coming by writing PV also, but this is not NPV. This is just the present value of all the 4 figures. अब मान लीजिए investment is 5000. I will say this is my PV. I will write this PV, and this I will write NPV. NPV will be minus 5000, so it will be coming 1181.95 और क्या। अब मेरे को ये नहीं दिखाना है कि ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैसे लाया, बिकॉज एक्सेल इज अलाउड इन एग्जाम। मैंने एक वीडियो डालकर यूट्यूब में रखा है जिसमें ये सारा फॉर्मूला मैंने पहले अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लिया था, और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने यूट्यूब में वो वीडियो डाल दिया था। यूट्यूब अराउंड 1.5 ईयर बैक, क्योंकि मेरा भी बहुत एक्सेल में उतना हैबिट नहीं, बट देन टू मेक द स्टूडेंट रेडी वी नीड टू टीच देम. So in one class I have focused on that only around 1.5 year back. Showing you that video, you can see that video for half an hour. बीच में I am showing all the calculation, average sum and all that. Average में दिखा रहा हूं. I am showing you that video. Remote exam 2.59 FM. PM FM. This one. ACCA FM September 2020 remote based. FME, FME, this is entire Excel I am showing. Average, simple average, weighted average, NPV, IRR, everything. First of all, I studied myself कि भाई मेरे को आ जाए 4 बार 5 बार मैंने किया, फिर क्लास में ही बताया था. तो आपको अगर फॉर्मूला सीट नहीं देखना है, you see this video. This is around August 11, 2020 का वीडियो है, and this I have made this video and uploaded on YouTube so that student can get the benefit of shortcut calculation. This is very essential in FM and AFM exam. दोनों एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. It's must. I will say not an optional, so that you can leave the formula reading and all that. उसके बाद सीधा आप इसको करोगे तो बेटर रहेगा, because in that case you will be able to manage the things faster. सर अगर थ्योरी भी लिखना चाहे एक्सेल में तो लिख सकते हैं, ऐसा उसमें वो restriction नहीं, आप लिखोगे एक बार लिखो तो सर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वो रो कॉलम उतना ही रहता है ना, तो उसको आगे पीछे टानने में इधर उधर चला जाएगा, मजा नहीं आएगा यार. सो इफ यू राइट थ्योरी इन द एक्सेल यू विल फाइंड द प्रॉब्लम विच यू विल नेवर ट्राई इन एग्जाम. ठीक है, हाँ, तो ट्राई करने से पता चलेगा ना. वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब आप पेपर करोगे 3 घंटा में, तो आपका ये जो प्रॉब्लम्स है ये सब भी दूर होगा, प्लस आप स्पीड कैसे लाओगे ये भी आएगा, दोनों आएगा. और आपको ये पता चलेगा ही कि मेरा वीक एरियाज क्या है, किस पे मेरे को ध्यान देना है, कौन सा पढ़ना है. तो एक साथ तो सारी चीजें हो रही है, तो ये करना तो मस्ट हो गया ना, फिर तो ऑप्शनल नहीं है ऐसा. हाँ, या सर एक चीज तो कि एक्चुअली वो जो एक्सेल में तो सर एनपीवी बहुत जल्दी से कैलकुलेट होता है, जो हाँ. मैनुअल में थोड़ा बहुत टाइम लगता है. हाँ, हाँ,
हाँ। एक्सेल में एक्चुअली सर इट वाज माय ऑब्जर्वेशन कि शायद थोड़ा ज्यादा आई मीन कम टाइम में होता है। नहीं, सभी चीज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपका टाइम बहुत जगह बच रहा है जो आपका पेन एंड पेपर एग्जाम में नहीं बच पाता है। आप कोई भी चीज कॉपी कर रहे हैं, उसको वापस से उतारना नहीं पड़ रहा है, लिखना नहीं पड़ रहा है, तो अराउंड 10-15 मिनट्स यू सेव इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. But then if you are not conversant with the technology of the software, then in that case you will be wasting your time in exam. तो सर जस्ट एक हाँ, सवाल है सर हाँ, मेरी तरफ से सर, इट्स बेस्ड ऑन अ टॉपिक हाँ, पर्टिकुलरली हाँ, जस्ट वन एरिया हाँ, सर, वो एक्चुअली समटाइम्स आई टेंड टू फॉरगेट दैट हाँ, टॉपिक सर, आई एम सॉरी फॉर द सेम हाँ, सर। इस्लामिक फाइनेंस, नो सर वो तो सर याद है। हाँ, हाँ, सर जो ब्लैक शोल्स मॉडल है सर, हाँ, वो कैलकुलेट करना आता है हाँ, ऑप्शन टू डिले अ प्रोजेक्ट। सो सर वो जो लिमिटेशंस ऑफ ब्लैक शोल मॉडल, मान लीजिए किसी क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द आई मीन लिमिटेशंस क्या है कि ब्लैक शोल्स में आप ब्लैक स्कोल मॉडल में जो कैलकुलेशन करते हैं वो सब लिमिटेशंस में डाल दीजिए। जैसे आप ये सोच रहे हैं ब्लैक स्कोल मॉडल में यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर रेट टू फाइंड आउट वैल्यू इन एनी मॉडल, वेदर एपीबी एनपीबी सभी जगह तो डिस्काउंट रेट. So discount rate when you are estimating for finding out whether that discount rate incorporates the entire risk factors or not. First thing. Second thing, when you apply the formula, you are saying S is spot price. You can say share market price or anything. And then you say exercise price. So you are calculating value based on that S and E. But in the practical life, that S and E is not sure. हम लोग अगर बोलेगा कि मान लीजिए मार्केट में रिलायंस का शेयर का दाम 2000 है और मेरे को 2500 का ऑप्शन खरीदना है, तो आई एम टेकिंग एक्सरसाइज प्राइस 2500 एंड प्रेजेंट स्टॉक प्राइस 2000. उसके बेसिस पे कॉल वैल्यू आया ना, पुट वैल्यू आया. इफ यू चेंज द एस एंड ई, द वैल्यू विल चेंज. So in any project when you are saying investment will be this. Suppose the sum which we were doing, investment is going to be 30,600. Who says that in the project the investment will be 30,600? Who says that the cash flow which you are calculating, the cash flows are certain? The cash flows will not be changing. आप जो कैश फ्लो के बेसिस पे ई निकाल रहे हैं, आप जो एस ले रहे हैं, आप जो डिस्काउंट रे ले रहे हैं, आप जो टाइम सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट विल बी 4 years. इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो द डायरेक्टर्स आर थिंकिंग 4 years एंड दे आर थिंकिंग दैट इट विल हैव अ गुड वैल्यू आफ्टर 4 years. हाउ कैन यू एस्टिमेट दैट द 4 years विल बी करेक्ट? So whenever we do any calculation, not only black school, हर जगह जो कैलकुलेशन हो रहा है वही उसका लिमिटेशन है. कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसके बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट कर पाएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, उसमें ये कैश फ्लो आएगा. वो अपने आप में ही तो एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ना कि हाउ कैन यू बी श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू द प्रोजेक्ट आफ्टर 2 years? हाउ कैन यू बी श्योर दैट दिस रेट ऑफ रिटर्न शुड बी रिक्वायर्ड? हाउ कैन यू से दैट यू विल बी गेटिंग दीज कैश फ्लोज फॉर दिस मेनी ईयर्स? हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट द टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट? एट द सेम टाइम जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं. When you do calculations on probability, then we say that we are talking about persons, those who are neutral. They are not aggressive, they are not defensive. The probability is always says that you are a risk neutral person. But when practically we think there are some persons who are very optimistic, they don't think the probability is a subjective estimate. When you calculate based on normal distribution, then it's a subjective estimate. It is based on mean. In normal distribution, we are assuming what? Because Black-Scholes calculation is based on ND1 and ND2, which is basically normal distribution figure. So normal distribution to based on the assumption that on the mean the highest probability is there. Who says that in the project which we are doing, it is cash flows are normally distributed? The cash flows may be asymmetric. They are not normally distributed like a mountain. Other side the probability is higher. जितना भी कैलकुलेशन सब कर रहे हैं, जो भी फैक्टर आप यूज कर रहे हैं, वो सब उसका एक लिमिटेशन है. ये टेक्निकल हुआ. दिस इज आई एम नॉट यूजिंग एनी क्वेश्चन फिगर. When you will be writing this, if you write this, suppose they are asking limitations of Black-Scholes 5 marks, I will be getting 2 only. Technically I am perfect, but I am not using the data which is given in the question. कि यहां पर जो उन्होंने 4 साल एज्यूम किया है, ये 4 साल लॉजिकल है कि नहीं. while explaining the limitations of T, when I am explaining the limitations of S, तो I should be using the figure which they have said for the investment, for exercise price. जब मैं उसको यूज करूंगा, then I will be getting full marks on limitations.
So it's not only this formula. Somebody will say that APB का limitations. Whatever calculations you are doing in APB, in financial cash flows, financing benefit, base case NPV, आप सब चीज तो assume करके निकाल रहे हैं ना, तो वो सारा ही तो उसका limitations है, assumptions है. जब आपका क्लैरिटी हो गया, आप एक कोई क्वेश्चन निकाला, उसका अपने लैंग्वेज में लिमिटेशंस लिखा, इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ा, वो लोग क्या लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कहां इंप्रूवमेंट करना है, अपने आप को समझा लिए, हो गया. उसके बाद उनका आंसर को याद नहीं करना है, नॉट पॉसिबल. आप उनका आंसर याद कभी कर ही नहीं सकते, मत सोचिए याद करने का, ना कोई फायदा है. कितना सारा याद करेंगे यार, कोई लिमिट थोड़ी ना है. और क्वेश्चन तो एक भी रिपीट होना नहीं है, आप एग्जाम दे चुका है 2-2, आपको पता है. तो हम लोग वो चीज को याद करके क्या करेंगे, समझना है. मान लीजिए प्रदीप जी समटाइम कॉल, सर यहां पर ये लोग रिस्क फ्री रेट ले रहे हैं, यहां पर ये लोग ये लिया, अरे दोनों ही अलाउड है. कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है ना कि एपीबी के अंदर फाइनेंसिंग बेनिफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ डेट यूज करना है. अब कहीं पर कॉस्ट ऑफ डेट दे हैव यूज्ड रिस्क फ्री रेट, कहीं पर कॉस्ट ऑफ डेट दे हैव यूज्ड नॉर्मल डेट रेट. अब क्या करें यार, बोथ आर करेक्ट. दैट इज द लिमिटेशंस कि the method does not says that what will be the cost of debt, whether it's a risk free rate, whether it's a normal debt rate. तो इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनर जब आप एक्चुअली एग्जाम आंसर देखेंगे जो इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट आंसर, they must be saying here tax shield on subsidized loan. The risk free rate of 2.5% could also be used for discounting. They have solved the question by 5% normal discount, normal debt, cost of debt, but they are saying you can use 2.5% also. कहीं कहीं पर नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन करके हम लोग टेंशन लेते रहते हैं बेकाम का बात में. जैसे कि ये जीवन मरण है कि अगर हम ये यूज कर ले, मान लीजिए गलती हो भी गया यार, दैट विल नॉट डिसाइड योर पास एंड फेल. Whatever the important thing, we are overlooking those things in discussing the illogical thing. कोई कैलकुलेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट में हो गया, कोई स्पॉट स्वैप में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, प्लस एग्जाम में भी तो होगा, उससे थोड़ी ना फेल पास हो रहे हैं. फेल पास का कारण तो अलग है, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि दे वी नीड टू गो इनटू साउथ, वी आर गोइंग इनटू नॉर्थ, सो फॉर दैट रीजन द रिजल्ट्स आर नॉट देयर. तो दीज आर, और आई मीन टू से डोंट टेक crack your brain in these 10 days on silly things. Silly things से कोई फायदा नहीं है. आप अपना माइंड को ब्रॉड करके पढ़िए कि आई हैव टू पास एंड आई हैव टू परफॉर्म लाइक दिस, देन द रिजल्ट्स विल कम. आप अगर सिली थिंग्स पे ध्यान देंगे कोई फायदा नहीं. सर जैसे इसमें सब्सिडाइज्ड लोन में कैलकुलेशन है ना, हाँ, अमाउंट इनटू ब्रैकेट दिया है, हाँ, तो ये भी हम लोग को ब्रेकअप नहीं दिखाना है. नहीं, ये लोग ये आपको ये लोग दिखा रहे हैं कि आप समझ पाए, आपको नहीं दिखाना है ये, नहीं. लेकिन आप सोचिए कि अगर आप ये ब्रेकअप नहीं दिखाएंगे तो आप एग्जाम में सीधा ये कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं राहुल जी, आप बताओ. तो वो एक्सेल में हम लोग इक्वल्स टू डालेंगे ना, तो इक्वल टू डालेंगे तो फिगर्स तो लिखेंगे ना, माने अपने आप आ जाएगा, तो एग्जामिनर अपने आप देख लेगा, आपको और नहीं लिखना है, हो गया. उसको अगर चेक करना है तो वो डबल क्लिक वहां पर करेगा, जैसे हमने यहां पर किया अभी. तो मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे को दिख रहा है ना क्या हुआ है. हाँ, क्यों नहीं आएगा. तो पहले एक्सेल नहीं था उस समय, और या मान लीजिए अभी भी एक्सेल है तो भी वो लोग आपको समझाने के लिए लिख रहे, सो दैट यू कैन नॉट रेज क्वेश्चन ये फिगर कहां से आया. वो लोग पूरा आपको तोड़कर बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को शॉर्टकट मारना है. कैलकुलेशन हम इसी तरह दिखा रहे हैं, यही मेरा कैलकुलेशन है और मेरा कोई कैलकुलेशन नहीं है. सर एग्जामिनर लोग ऐसे खोल के देखता है क्या? सर एग्जामिनर लोग, हम लोग तो अभी एग्जामिनर क्या करता है ये तो हम लोग अभी पढ़े. सर एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने ये बोला यहां पर नोट में, ये बोला हम लोग पढ़े अभी कि इट इज नॉट द टास्क ऑफ द मार्कर टू रीवर्क व्हाट इज कैंडिडेट आंसर टू डिटरमाइन हाउ और वेयर एरर्स आर देयर. कि आपका आंसर मॉडल आंसर से नहीं मिल रहा है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं चेक करूं आपने गलती कहां की और मैं लिख के बताऊं कि मिस्टर राहुल, मिस्टर कुशल, यू हैव डन मिस्टेक हियर. मेरा ये काम नहीं है. बस आपने जो गलती किया उसका मार्क्स कट जाएगा, मैं आपका बैक कैलकुलेशन करके पता नहीं लगाने जा रहा हूं कि आपने कहां गलती की है. हां, इन्होंने यहां पर हम लोग को बता दिया कि भाई स्टूडेंट ने यहां गलती की है, लेकिन एग्जामिनर का ये ड्यूटी में नहीं आता है कि वो स्टूडेंट का हर एक गलती को पॉइंट आउट करके वहां बताए. तो आपका कैलकुलेशन, हाँ बोलिए. सर एक चीज है, क्योंकि मैं एएफएम अभी दे नहीं रहा हूँ, मैं हाँ, अभी आपको पता है एजवेल दे रहा हूँ. हाँ, तो नहीं मेरे को किसी नहीं पता है. आपको तो ठीक है, पता ही सर. नहीं एक्चुअली माने एक एक जन का याद नहीं है ना यार, सॉरी यार. ठीक है, हाँ, 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 सर तो जैसे कि मेरे को याद है जब मैं एफएम में पीवी या फ्यूचर वैल्यू वगैरह निकालता
तो सर स्लाइट वेरिएंसेस आता था आंसर में। वो स्लाइड वेरिएंसेस के लिए मार्क्स नहीं कट रहा है, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन एरर। वो तो हाँ हाँ सर वो तो ठीक है, हाँ लेकिन वो स्लाइट वेरिएंसेस से फर्दर कैलकुलेशंस में जाते रहते ना सर, तो सर वो $5 का फर्क। तो वो तो फर्क जब उन्होंने यहाँ पर अभी बताया, जब हम लोग ये किए तो ये स्टूडेंट का तो आंसर ही रॉन्ग है यार। उसका कैलकुलेशन में 8,000 के बदले वो 9,000 लिखा है, तो उसका आंसर तो रॉन्ग हुआ ना। लेकिन इंस्टीट्यूट ने तो कैलकुलेशन में उसको 14 में 12 नंबर दे दिया है। उसका कैश फ्लो रॉन्ग है, टैक्स रॉन्ग है, तो उसके बाद फाइनल कैश फ्लो रॉन्ग है, तो टाना मुनी तो रॉन्ग होएगा ही, पीवी डिस्काउंट रेट भी रॉन्ग है, फिर भी 14 में 12 मिल गया यार। तो आप अगर एक गलती की, उसका एक ही बार पेनल्टी है। आप उस गलती के बेसिस पे और जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनमें लॉजिक सही है, उन सबका नंबर मिलेगा आपको। यही तो बोल रहे हैं वो लोग, ये बोल रहे हैं वो लोग। इसीलिए मैंने अपना बुद्धि लगाया नहीं, मैं तो इंस्टीट्यूट का मार्किंग किया हुआ खोला हूं यार, वेबसाइट से मैंने लिया है, दिया हुआ है वेबसाइट पे। आप थ्योरी लिख रहे हैं, थ्योरी में मान लीजिए आपने एक पॉइंट गड़बड़ लिखा, तो वो पॉइंट जो गड़बड़ हो गया कि मान लीजिए द कंपनी शुड सेलेक्ट, लाइक इन दिस क्वेश्चन, द कंपनी शुड गो फॉर सब्सिडाइज लोन और द कंपनी शुड गो फॉर कन्वर्टेबल डेट। ओके, मान लीजिए आपने सब्सिडाइज लोन लिख दिया, कन्वर्टेबल लोन लिखना था, नंबर कटेगा उसका। लेकिन सब्सिडाइज लोन के ऊपर जो जो लॉजिक देना आपने सब सही दिया, सब नंबर मिलेगा आपको सारा। दिस इज कॉल्ड ओन योर एरर रूल, कि आपने गलती की, उसका नंबर कटा, लेकिन उसके बेसिस पे जो सारी चीजें आपने लिखी हैं सब सही है, सब नंबर मिलेगा आपको सारा। Which they are saying, I am not saying, that is their rule, and which is also in CA also, believe me, कि सब लोग सीए का बुराई करते हैं कि जबरदस्ती नंबर, फालतू बात करते हैं। एकदम सही बोल रहा हूं मैं। मेरे को सीए का कॉपी चेकिंग में एक जगह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नहीं परफॉर्म किए तो नंबर नहीं आया, और कोई के साथ 50 आना था 49 आ गया, उसके लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता यार, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। दैट इज आई एम सेइंग कि वी नीड टू गिव आवर एफर्ट्स, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके सर, मैं तो सीए बहुत सालों, सौम्यदेव है जी स्टडीड सीए फ्रॉम मी। मैंने सीए 2014-15 तक पढ़ाया था, उसके बाद मैं बंद कर दिया। उसके बाद आई एम टीचिंग सीमा, एसीसीए, सीपीए, सीएमए, ऑल दीज। हाँ सर, क्योंकि मेरे दीदी जी ने मेरे को बताया। हाँ हाँ, वो सब आपसे ही पढ़े हुए हैं, तो वही अच्छा पढ़े होंगे सर, क्योंकि मैं पढ़ाता था पहले, सीए पढ़ाता था। हाँ, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं 6-7 साल से। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। डोंट टेक टेंशन ऑन सिली थिंग्स। ऐसा ये आंसर नहीं आ रहा है, मत सोचिए ये सब, ये मेरा एडवाइस है सबसे। Thank you. Take care, all of you. All the very best. Give your best. Tada.